Property number 5. Prove that integration of 0 to a f of x dx is equals to integration of 0 to a f of a minus x into dx. Okay, so f of a minus x into dx. So now proof. So let us consider I is equal to this integral, that is integration of 0 to a f of x dx. Okay, so now put x is equals to here. So put x is equals to a minus t. This becomes t is equal to a minus of x. Now differentiate it, dt is equal to minus dx. Okay, in place of dx you have to write minus dt. Okay, so minus dx becomes plus dx and minus dt and dt becomes minus dt. Okay, so now limits also change. Okay, if you change the variable in place of x to t, then limit also change. Okay, x is equal to 0. What about the t value? So here x terms is 0, then what becomes t is equal to a. So I will write t is equal to a, means 0 के जगह पे क्या लिखना, आप a लिखना. Then x is equal to a, अगर a है तो यहाँ पे a लिखना है. x के जगह पे a put करो, a minus a 0. So t value becomes 0, t is equal to 0. Then given integral I is equal to integration of 0 के जगह पे क्या पुट करना है, a पुट करना है, that is a and a के जगह पे क्या पुट करना है, 0. It is a f of x. x के जगह पे क्या पुट करना है, a minus of t, a minus t, and dx के जगह पे क्या पुट करना है, minus dt. So minus dt. Okay. So next I is equals to now this minus is multiple, bring outside. So minus of integration a to 0 f of a minus t into dt. Now I is equals to, remove this minus. If you remove the minus means limit will interchange, becomes 0 to a to 0 is 0, you remove the minus, it will become 0 to a. So f of a minus, in place of t you have to write x, in place of dt you will write dx, because property 1 and property 2 says that if you interchange the limit it becomes a negative. Okay, or interchange the limit it becomes a negative, becomes positive. And property 1 says that t is equal to x and dx is equal to dt. Okay, so therefore integration of 0 to a f of x dx is equals to integration of 0 to a f of a minus x into dx. This is a proof. Next, property number 6. Property number 6. Okay, so prove that integration of minus a to plus a f of x dx is equals to 2 times integration of 0 to a f of x dx. If f of x is even, okay, next in 0, when f of x is odd,
So first of all, consider integration of minus a2 plus a minus a2 plus a f of x dx can be written as integration of minus a to 0 f of x dx plus integration of 0 to a f of x dx okay. Minus a2 plus a, we have to split it here in two terms. Okay, so now here, so this is equals to, you have to consider this integral is a I1. Okay, so I1 is equal to integration of minus a to 0 f of x dx. Okay, so this integration we have to be changed into 0 to a f of x dx. तो a I1 को क्या करना है, हमें चेंज करना है, लिमिट्स माइनस a to 0 को 0 to a में कन्वर्ट करना है. ठीक है, कन्वर्ट करने के लिए क्या करना, I1 को सिंप्लीफिकेशन करना. ठीक है, तो I1 इज इक्वल्स टू, सो पुट हियर, सो पुट इन I1, सो I1 में पुट करना है, क्या पुट करना है, x इज इक्वल्स टू, सो x इज इक्वल्स टू माइनस टी I1 में पुट करना है. देन डिफरेंशिएट करिए, so this implies so dx is equals to minus dt. In place of dx you have to put minus dx in I1. Okay, so now limits also changed. So limits क्या है यहाँ पे, x is equals to minus a, x is equals to minus a, then t is equals to what, t is equals to plus a. x के जगह पे क्या लिखो, यहाँ पे माइनस ए लिखो, माइनस ए माइनस माइनस कैंसिल, t is equal to a. नेक्स्ट है x is equals to 0 पुट करिए, then t वैल्यू becomes t is equal to 0. okay, then integral becomes, that is I1 becomes integration of, that is I1 becomes, I1 is equal to integration of, देखिए माइनस ए के जगह पे क्या पुट करना है, लिमिट में प्लस ए पुट करना है, एंड 0 के जगह पे क्या पुट करना है, टी में 0 ही पुट करना है. नेक्स्ट एफ ऑफ एक्स के जगह पे क्या पुट करना है, माइनस टी पुट करना है, नेक्स्ट डी एक्स के जगह पे माइनस डी टी पुट करना है. ठीक है, सो नेक्स्ट दिस इज इक्वल्स टू I1 इज इक्वल टू सी, minus dt is there, minus bring outside, so minus integration of a to 0 f of minus t dt. okay, so now I1 is equals to, see, वी वांट टू रिमूव दिस माइनस, माइनस को रिमूव करना है, तो क्या करना, ए लिमिट्स को इंटरचेंज करना. ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ ए टू 0 है, तो 0 to a करेंगे तो माइनस रिमूव होगा, प्रॉपर्टी नंबर 2 इज देयर. ओके, सो एफ ऑफ माइनस टी है, माइनस टी की जगह पे क्या लिखेंगे हम, माइनस एक्स लिखेंगे, दैट इज अ प्रॉपर्टी नंबर 1. f of x is equal to f of t, f of minus t is equal to f of minus x. okay, so dx के जगह पे क्या मैं dt के जगह पे क्या मैं dx लिख सकता हूँ, yes, because प्रॉपर्टी 1 एंड प्रॉपर्टी 2 दोनों प्रॉपर्टी क्या है, it says that the interchanging the limits, then you will get the minus to plus, and interchanging the variable x to t and t to x, then value remains same. okay, so this is a property 2 and 3 is there. So now simplify this one, you will get 0 to a f of minus x dx. This is the I1 value. This I1 value put in the above equation. I1 क्या करना है, above equation में put करना है. Then equation becomes integration of minus a2 plus a f of x dx is equals to integration of 0 to a, this is the I1 value, f of minus x dx
प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a f of x dx। ओके, हमने I1 का वैल्यू है यहाँ पे हमने पुट करा, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू सी। अगर हम फंक्शन को यहाँ पे दो कंडीशंस हैं, ओके। इफ़ f of x इज इक्वल्स टू minus f of x that is a even, when f of x is even, okay, even है तो क्या होगा, even है तो minus f of x becomes plus f of x, then अब इक्वेशन नंबर 1, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1 पुट करेंगे। सो दिस इज इक्वेशन 1 पुट करेंगे। सो इक्वेशन 1 becomes इंटीग्रेशन ऑफ माइनस a to plus a f of x dx is equals to, so this is the integration of 0 to a minus f of x becomes plus f of x when even condition, okay, plus 0 to a f of x dx when function is even. Hence how many times, 2 times, same is there, 2 times integration 0 to a f of x dx when function is even, okay, when f of x is even, f of x इवन है तो क्या होगा, माइनस हो तो भी प्लस आएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट है सेकेंड कंडीशन, इफ़, ओके, सेकेंड कंडीशन है इफ़ f of x इज़ ऑड। अगर फंक्शन ऑड है तो क्या है, देखो f of माइनस एक्स है तो क्या आएगा, माइनस f of x ही आएगा, ठीक है। सो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ए टू प्लस ए f of x dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a f of माइनस एक्स, f of माइनस एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस f of x लिखेंगे इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a f of x dx, ठीक है। सो दोनों कैंसिल हो गए, दोनों कैंसिल हो तो क्या बचेगा यहाँ पे 0 व्हेन फंक्शन इज इवन, सॉरी फंक्शन इज ऑड, और फंक्शन ऑड है तो एक कंडीशन आएगा। Hence integration of minus a to 0, sorry, minus a to plus a f of x dx is equal to integration of, sorry, 2 times integration of 0 to a f of x dx when function is even, okay, f of x is even, okay. Next 0 when f of x is odd. This is a proof. This is very important. This is very important for 6 marks. Next one, property number 7, last property. Property 7. Prove that integration of 0 to 2a f of x dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे भी दो कंडीशन है, 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a f of x dx, कंडीशन इज देयर f of 2a minus x इज इक्वल टू f of x, यहाँ पे 0 when f of 2a minus x इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे माइनस है, माइनस एफ ऑफ एक्स, ओके। सो नाउ हियर प्रूफ फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन इंटीग्रल कैन बी रिटन एज, इसे भी स्प्लिट करना है प्रीवियस के जैसा बाय यूजिंग इंटीग्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी नंबर 2, सॉरी प्रॉपर्टी नंबर बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 3, ओके। 0 to 2a f of x dx can be written as integration of 0 to a f of x dx plus integration of a to 2a f of x dx, ओके। सो ये जो भी है a to 2a लिमिट को 0 to a में कन्वर्ट करना है, ओके। तो दिस इज कॉल्ड I1, इसे हम I1 लेंगे, ओके।
तो I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a टू a f ऑफ x dx। ठीक है, लिमिट्स को क्या कन्वर्ट करना है, 0 टू a में कन्वर्ट करना है। सेम ऐसा आना 0 टू a f ऑफ x dx आना। तो I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू a f ऑफ x dx। ओके, नेक्स्ट देखिए, so put x is equals to 2a minus t। ओके, I1 में पुट करना है x is equal to 2a minus t। ओके, देन डिफ्रेंशिएट करें, इसे क्या आएगा, dx is equals to minus dt आएगा। इन प्लेस ऑफ dx यू हैव टू राइट minus dt। ओके, तो x के जगह पे क्या लिखना है, हमें x के जगह पे 2a minus t लिखना है। ओके, अगर x टू t कन्वर्ट हुआ तो क्या होगा, लिमिट भी चेंज होगा। लिमिट क्या है यहाँ पे, फर्स्ट x इज इक्वल टू a है, x इज इक्वल्स टू a अगर लिमिट लिखे तो t का वैल्यू क्या आएगा, t इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे x के जगह पे यहाँ पे लिखेंगे हम, दिस इम्प्लाइज t इज इक्वल टू क्या होगा, t इज इक्वल टू 2a माइनस एक्स होगा। ओके, सो 2a माइनस एक्स होगा। हेंस x इज इक्वल टू a, अगर यहाँ पे x के जगह पे a पुट करें तो 2a माइनस a, देन t वैल्यू इज a। एंड x इज इक्वल्स टू, अगर हम 2a पुट करें तो ओके, देन t इज इक्वल टू क्या आएगा, देखिए 2a माइनस x के जगह पे 2a माइनस 2a इज 0। ओके, लिमिट्स वैसा चेंज करना है। ठीक है, देन I1 बिकम्स, I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a के जगह पे क्या है, a के जगह पे लिमिट्स a के जगह पे a है, एंड 2a जगह पे 2a जगह पे क्या है, 0 है। यहाँ पे मैंने 0 लिखा। f ऑफ x है, x मीन्स व्हाट, 2a माइनस t, सो आई विल राइट 2a माइनस t। नेक्स्ट dx है, dx के जगह पे क्या है, माइनस dt, सो माइनस dt। देन I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ओके, माइनस dt इज देयर, माइनस bring outside, so I will write here minus and limit a as it is and 0 as it is, f of 2a minus t into dt। अगर माइनस को रिमूव करना है तो क्या करना, लिमिट को इंटरचेंज करना। ठीक है, देन I1 इज इक्वल टू लिमिट विल इंटरचेंज, दैट इज 0 टू a। ओके, देन f ऑफ 2a माइनस t के जगह पे क्या मैं x लिख सकता हूँ, s, बिकॉज प्रॉपर्टी नंबर 1। सो dt के जगह पे dx, बिकॉज प्रॉपर्टी 1 एंड प्रॉपर्टी 3 है रीजन, सॉरी प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 1 एंड प्रॉपर्टी 2। ओके, सो नेक्स्ट, तो नेक्स्ट I1 का वैल्यू क्या, तो I1 का वैल्यू क्या करना, इक्वेशन में पुट करना। ठीक है, जो अब इक्वेशन जो कंसिडर करे थे वो इक्वेशन में I1 का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 2a f ऑफ x dx इज इक्वल्स टू, सो इंटीग्रेशन ऑफ, सो 0 टू a f ऑफ x dx प्लस, in place of I1 value you have to put this one। okay, so integration of 0 to a f of 2a minus x into 2a minus x into dx ठीक है। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। टोटल को इक्वेशन नंबर 1 हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, इस इक्वेशन नंबर 1 में दो केसेस है यहाँ पे। ओके, तो फर्स्ट केस नंबर 1, फर्स्ट केस क्या है यहाँ पे, सी एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ एक्स है। ये क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। ठीक है, सो एफ ऑफ 2a माइनस ऑफ एक्स के जगह पे क्या पुट करना है, एफ ऑफ एक्स पुट करना है। देन इट बिकम्स, सो अबव इंटीग्रेशन 0 to 2a f of x dx is equal to, this is as it is, 0 to a f of x dx as it is, plus this equation becomes 0 to a f of 2a minus x के जगह पे f of x पुट करना है, f of x into dx। how many times total, 2 times integration 0 to a f of x dx। this is the first case। okay, proved। next similarly case number 2 is there।
केस नंबर 2, केस 2 में क्या है, एफ ऑफ 2 माइनस एक्स 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स पुट करना है, ठीक है। देन इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, okay, plus integration of 0 to a in place of f of 2a minus of x minus f of x, so minus f of x, okay। इक्वेशन नंबर 1 I1 में है तो यहाँ पे f of 2a माइनस ऑफ x के जगह पे माइनस f of x पुट करना है, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे प्लस है या माइनस, दोनों के आंसर क्या बचा, 0। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2a f of x dx is equal to 0 when case f of 2a minus x is equal to minus f of x. So hence integration of 0 to 2a f of x dx is equals to, okay, 2 times integration of 0 to a f of x dx condition f of 2a minus x equal to f of x and 0 when f of 2a minus x is equal to minus f of x, okay। This is a required answer. This is also very important, okay। This is a very important for 6 marks। एग्जाम में फिक्स क्वेश्चन से ही पूछे जाएगा एग्जाम में 6 मार्क्स के लिए विथ एग्जाम्पल्स, ओके।